So welcome guys to the fantastic programmer. And before starting today's topic, I would like to thank you for all of you for making 1000 YouTube family for us. I know it is not a big milestone, but yes, it's a starting, and I hope we will reach out the big milestone like that. Okay, and we are always help you placed in a IT giants and solve your queries like joining related queries and exam related queries, not only for the TCS but other IT giants as well. Okay, so now let's coming to the topic, and the today's topic are uh, what is the last date of BGC background verification check or background document check, and the other one question is most asked question, what is the last date of NSR IT pin entered date. ओके सो इन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक की लास्ट डेट क्या होती है. व्हेन यू विल रिसीव योर जॉइनिंग लेटर, आफ्टर दैट दे कंडक्ट अ मीटिंग व्हिच इज फर्स्ट कनेक्ट विथ यू, and in the first connect they're telling you what is the last date of background check and background verification. Okay, and what is the last date of document uploadation. So they tell you everything, and after when you upload all the documents, so their verification is started, and after upload all the documents you are ready for the joining. Now the question is, before getting joining letter, what is the last date of background check and document upload date. Okay, so there is no last date. Okay, you can upload now or later. Okay, those documents you have available now, you can upload now, and thus you are not available, you can apply for that. Like most of the documents that you have not available now, I know the passport and the birth certificate and some of the issues like PAN card, Aadhaar card, the name mismatch, the date of birth mismatch, so you can start correction in that document as well. Okay, and it is the ऑल अबाउट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की लास्ट डेट क्या है. ज्वाइनिंग लेटर के बाद वो खुद बता देंगे आपको कि क्या लास्ट डेट होने वाली है, एंड उसके पहले आपको कभी भी कर सकते हो आप, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो आप कर दीजिए अभी अपलोड, जो नहीं है उनको बनवाने के लिए दे दीजिए, और वो जब अवेलेबल हो जाए तब उनको अपलोड कर देना. नाउ आफ्टर दैट some other documents they provide you in the next step portal, like service agreement, medical certificate, non-criminal affidavit. 3 documents they provide you in the format, and you have to make them with their format, and they provide also sample documents with you, so you can make your document by looking the sample documents. Okay, so ये रहने वाला है आपकी जो भी अदर डॉक्यूमेंट जो आपको ज्वाइनिंग के बाद दिए जाएंगे, और आपको एनएसआर कार्ड भी तभी, आपका जो टेब आएगा एनएसआर कार्ड का अपलोड करने का, वो भी आपको तभी अपलोड करना है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ एनएसआर आईटी पिन एंटर डेट. ओके, जो भी आपको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर आईटी पिन एंटर करने का वहां पे दिख रहा होगा, जहां पे आपको 12 डिजिट के आईटी पिन जानना आपको एनएसआर कार्ड का, सो उसकी भी कोई लास्ट डेट नहीं है. आप चाहे तो ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी आप डाल सकते हैं. Okay, most of the students are applying for the NSR card after joining because ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं है, एक आध हफ्ते में बन जाता है. लेकिन आप का जब भी सेमेस्टर एंड होगा उसी टाइम पे आप बनवाना स्टार्ट कर लीजिएगा एनएसआर कार्ड, क्योंकि कभी कभी हो जाता है किसी किसी का एनएसआर कार्ड लेट भी हो जाता है, तो आप तब स्टार्ट कर सकते हैं. सो आई होप आई सॉल्व योर this most important queries, and most of the question was asked to me like NSR card and background check. So I hope आपको ये क्लियर हो चुका होगा क्या लास्ट डेट होती है दोनों की. एंड और भी बहुत सारे वैल्यूबल वीडियोस मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास में, तो मैं उन क्वेश्चंस को अलग अलग रख रहा हूँ और उनके ऊपर एक वीडियो के थ्रू आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सारे डाउट्स एक ही बार में क्लियर हो जाए. ओके, एंड ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहना, एंड हम भी आपके लिए बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस बनाते रहेंगे. एंड अभी के लिए थैंक यू सो मच, एंड कीप सेफ, कीप हेल्थी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. एंड if you subscribe, so welcome to the fantastic programmer family. Thank you so much.